नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is the pre-market report for 9 September 2025, that is for Tuesday. Without wasting time, let us look into the FnO data and how to read this data. Friday means what positions each of the market participants, retailers, DII, FA and pros carried during Friday 2 days ago. Monday means what positions they carried in the market on Monday, and what is the total, it is what are the positions they are carrying it for Tuesday. सो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करते हैं. और हम लोग इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो ज़्यादा कारोबार देखने को नहीं मिल रहे. तो ये डाटा हल्का डाटा है. सो द वॉल्यूम्स आर वेरी लेस. Retailers added additional 2,400 contracts and the total increased to 1.33 lakhs, which is a high number. This is not at all good for market. They added 1,200 contracts and their total increased to 38,000. FAI, negligible number. They are still holding 1.91 lakh contracts in the short side. Pros, they sold around 3,600 contracts and the total reduced to 20,000. So overall, I'd say this data is bearish because FA is holding heavy index future shorts, and retailers are the major player. They are carrying the longs. लेट अस लुक एट इंडेक्स कॉल. अगर इंडेक्स कॉल में देखें तो रिटेलर ने कुछ 24,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया और इनका नेट लॉन्ग reduced to 320 lots, negligible number. DA, no position at all, and FA, surprisingly they purchased 49,000 and their net short converted to net long. This is good for the market. Pros, they sold 25,000 and their net long become net short. But if you look in index call, the volumes are very less and the net positions are also very less. So I would say this data is bullish. The retailers are bearish here. इंडेक्स पुट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डाटा. सो आजकल पूरा काम इंडेक्स पुट से हो रहा है. इंडेक्स पुट में रिटेलर फिर से नेकेड सेलिंग कर दिया. सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. चाहे मार्केट गिर जाए उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. कितना भी लॉस हो, उनको डेली एक ही धंधा है, ब्लाइंडली नेकेड पुट राइटिंग करना है. तो देयर इंडेक्स पुट रीच टू 4.56 lakhs. दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर मार्केट अप मोमेंटम. अगर मार्केट ऊपर गया भी है, सस्टेन नहीं करेगा. आज जैसे कितना फ्लैश क्रैश हुआ वैसे ही होगा. डीए का कोई पोजीशन नहीं. एफआई, दे परचेज वेरी लेस क्वांटिटी, 1100 lots in index put long, and pros they purchase 22,000 index put longs. The concerning thing is that for FA, their index longs reached to 2.86 lakh and pros it is reached to 1.32 lakh. Whereas for retailers, it is in the short side 4.56. That means index put, retailers are only bullish and the big players are bearish. I would say this data is bearish. Stock future, and this data looks good because all the participants, they added additional longs in stock futures, especially FIA. So I would say this data is mixed to bullish, but yeah, you don't need to consider DII. This is against hedging against their cash market positions. Stock call also you can see, this is also mixed to bullish. The volumes are less, but the concern is that overall, if you look at, this is still negative because retailers are holding 3.7 lakh in the stock call longs, whereas pros are holding 2.9 lakhs in the short side. Stock put here also mixed. This is also mixed to bullish. Retailers added some shorts and pros carried bullish positions. But then the overall positions still it's not looking good. But to conclude the FNO positions, I would say this data is fully mixed. So you can see
up momentum and down momentum. Don't keep any prejudice. If market is moving upside, take long. If market is moving downside, take shorts. कैश मार्केट डाटा फिर से FnO भेजना, जब उनका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 2170 करोड़, DII 3000 करोड़ बाई किया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, क्योंकि FA बड़ा खिलाड़ी है, उनका इतना इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, वो इससे गेम पलट सकते हैं. So it is very tough to deal with FA. Let us take a quick view on our market. What happened today? Almost all the major indexes, Nifty, Sensex, Nifty Bank, Mid Cap, all are looking positive. But the the scariest thing is that all these indices fell from their top. At least Nifty fell 100 points. Sensex also fell around 300 points. Bank Nifty fell around 400 points from the top. Similarly, mid cap was the less compared to the other indices. For everything, though it's showing in green, but the fall was very brutal. Some positive news, that is the USD INR. Finally, rupee is gaining some strength. This is positive for our market. India, you can say it is flat. So any rise in the India VIX, that will be good for option buyers as well as for option sellers. क्रूड हम लोग देखेंगे तो कुछ अप मूव दिख रहे क्रूड में, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कुछ माइल्ड माइल्ड पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग नेचुरल गैस. ये बैंक निफ्टी में दवा डाल सकते हैं अगर क्रूड और ऊपर चला गया तो. आज सेक्टरल परफॉर्मेंस हम लोग देखें तो निफ्टी ऑटो इतना भाग गया 3.3%, पिछले 2-3 दिन से भाग रहे, और निफ्टी PSU बैंक 0.5% भाग गया, और रियल्टी सेक्टर भी थोड़ा भाग गया, और मेटल भी भाग गया. आज निफ्टी IT सबसे लगाड़ता है, इसलिए न्यूज़ के कारण ये नीचे जा रहे, बिकॉज US इज कंसिडरिंग टू इम्पोज टैरिफ एंड दे आर पुटिंग सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द आउटसोर्सिंग IT बिजनेस. और फार्मा में भी यही चल रहा है, फार्मा भी नीचे जा रहा है, इसलिए कभी भी ट्रम्प फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं. Some of the stocks to watch, I'm not covering it, so you guys can go through it by posting the video. Vedanta, SpiceJet, Arabando, these are all good stocks. Please read and understand what is this news. Top gainers and losses. I wanted to spend a minute here because if you look here, almost all the auto sectors are the major gainers today, and JSW Steel as well. So tomorrow I'm just giving an idea to some of the people who wanted to short in these stocks. कल को ये महिंद्रा टाटा मोटर्स बजाज ऑटो, ये सब अगर गैप अप खुल गया, आप लोग एक शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं. ज़्यादा पॉइंट नहीं रखना, कुछ 25-30 पॉइंट, मतलब आप ऑप्शन में बाई करना चाहते हो, मान लो अगर पुट बाई करना है, पुट में अगर 6-7 पॉइंट मिल सकते हैं इसमें, तो इसको नज़र रखना. और जो ट्रेंड, एशियन पेंट्स, SBI, लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, इन सब में लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं बनाना, तो इसलिए मैंने ये गेनर्स एंड लॉसेस के बारे में आप लोगों को बात किया. फाइनली वी रीच टू द आउटलुक एंड व्यू फॉर आवर व्यू फॉर टुमारो, दैट इज ट्यूसडे. सो निफ्टी, द मेजर सपोर्ट इज एट 24,670. अगर जब तक ये 24,670 के ऊपर है निफ्टी, ये बुलिश है. अगर 24,670 टूट गया तभी बेयरिश व्यू लाना, और मेजर सपोर्ट है 24,550. जब तक 24,550 होल्ड है तो मार्केट में बाउंस आता रहेगा. तो इसका मतलब है हम लोग ऊपर का भी नहीं खेल सकते, नीचे का भी नहीं खेल सकते. जो कुछ भी हम लोगों को स्कैल्पिंग के जरिए मिलेगा, उससे खुश रहना पड़ेगी. और जो रेसिस्टेंस है, फर्स्ट रेसिस्टेंस है 830 है. अगर कल 830 को तोड़ के ऊपर जा रहे हो तो हम लोग 880 तक खेल सकते हैं. अगर उसको भी ऊपर गया तो 920 है, 920 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकते हैं 25,000 तक. अगर 25,000 टूट गया तो 25,200 तक जा सकते हैं. तो बैंक निफ्टी के लिए कोई चेंज नहीं लेवल में. 53,800 इज द मेजर सपोर्ट. अगर 53,800 ब्रेक हो तो अग्रेसिव शॉर्ट जाना. कल के लिए लेवल नोट कर लेना 5450. अगर 5450 बैंक निफ्टी तोड़ दिया तो शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं. तो मेजर सपोर्ट है 53,750 के पास. और रहा बात जो अपसाइड का, 54,220. जब तक 54,220 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होते, लॉन्ग कंसिडर नहीं करना. अगर 54,220
ब्रेक किया तो 20 54 350, देन 54 500। आज जैसे हुआ वैसे ही देखना। 54 500 भी तोड़ के ऊपर निकल गया तो 55,000 कल का खाली देखने को मिल सकते हैं। तो सेंसेक्स में उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं है कल का लेवल से। 8600 और 8700 है ये सपोर्ट लेवल। अगर ये टूट गया तो 8400 तक आ सकते हैं, ये मेजर सपोर्ट है। अगर मान लो अगर टूट गया 8400 तक आ गया, यू कैन कंसिडर ए लॉन्ग फ्रॉम 8400। और जो मेजर रेसिस्टेंस है 8800 जब तक जो सेंसेक्स इसके ऊपर नहीं टिकते, लॉन्ग कंसिडर नहीं कर। अगर इसके ऊपर टिक गया यू कैन कंसिडर लॉन्ग। तो टारगेट विल बी 81,000। 81,300 इज द की लेवल। अगर 81,300 ब्रेक हुआ तो बड़ा रैली देखने को मिल सकते हैं। और पीसीआर देखेगा तो पीसीआर सब अच्छा है, ना ये ओवरबॉट जोन में या ओवरसोल्ड जोन में, ये अच्छा है। सो ये दिस इज गुड फॉर अपसाइड मोमेंटम। मेरा जो व्यू है, ग्लोबल मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट अभी भी सेलिंग प्रेशर में है, बिकॉज जो एफआईए का डाटा है बेयरिश है। सो फॉर टुमारो द डाटा इज शोइंग मिक्स्ड डाटा, तो इसका मतलब है अपसाइड और डाउनसाइड का मूव के लिए आप लोग रेडी रहना। जहाँ भी मूव मिला तो उसको खेलने के लिए आप लोग रेडी रहना। लेकिन मेरा हिसाब से जो डाउन साइड मूव है कैप रहेगा, क्योंकि कुछ बुलिश पोजीशंस एफएनए छुपा छुपा खेल के बना हुआ है। तो जब तक ये डाटा है, हमें कोशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना फॉर बोथ साइड्स। अगर डाउन साइड का मूव मिल गया खेल लेना, ऊपर का मिल गया ऊपर का साइड खेल लेना। Finally, let us also take a look at the global markets. So, if you look here, the US markets are mixed to positive. Dow is showing mild negative, but Nasdaq is showing positivity, and Gift Nifty is also showing a positive indication for tomorrow. So, and Europe, if you look here, Europe is also German index DAX is moving up, and France is also moving up, and UK is mild negative. So overall, I would say this data is looking good for a gap up opening tomorrow. So that's all in this video, guys. If you like this content, please subscribe and share this content to your friends as well. And please like my videos. Bye.